Okay, put your hands on the heart chakra in Namaste Mudra like this. Silently repeat in your mind, to the Supreme God, all the great ones, all the Devas, Mahadevas, and all the great ones, all the holy gurus, all the holy masters, all the saints, all the archangels, holy angels, spiritual helpers, and spiritual elders, and especially Grandmaster Choa Kok Sui. We humbly invoke for your divine guidance, divine help, divine protection to understand the concept, to bring the change within our system, within our life, within all the areas of our life. Bless us with divine guidance, help, and protection to understand the teaching and practice the teachings properly, rapidly, enthusiastically. With thanks and in full faith, thank you. With gratitude, with respect, with love, thank you. Open your eyes with a smile. Atma Namaste. Welcome to the session. So those who are non-pranic healer, also welcome. जिसमें आप लोगों में से कुछ लोगों ने pranic healing नहीं किया है, you are also welcome to the pranic healing family. Okay, and just let me introduce myself. My name is Shalim Bhagat, and I'm in pranic healing since last 26 years. And I teach various courses in pranic healing like basic, advanced, psychotherapy, crystal, psychic side and soul class. And I am a trustee of Yoga Vidya Pranic Healing Foundation of Maharashtra, Mumbai North. मेरा नाम शालिन भगत है, मैं मुंबई बोरीवली से हूँ और प्राणिक हीलिंग में करीबन मुझे 26 साल हो गए और बेसिक, एडवांस, साइकोथेरेपी, क्रिस्टल, साइकिक सेल, सोल क्लास का मैं ट्रेनर हूँ. योग विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई नॉर्थ, इसका मैं ट्रस्टी हूँ. So let me introduce our Guruji. The session will be in both the languages. Session दो language में रहेगा, English and Hindi. So I will say in English and then I will repeat in Hindi because many people do not understand Hindi. Many people do not understand English. कुछ लोगों को English समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को हिंदी नहीं समझ में आता है. Yeah? So for that purpose, both the languages. Now I am sharing this with you about the Guruji. So those who are the new ones, ये हमारे गुरुजी है. He is our Guru, Grandmaster Choa Kok Sui, pranic healer. I mean, he is a founder in pranic healing. So he is the one. He is the Guru. So his research, his research for 23 years, and he has introduced pranic healing to general public in 1987. ये हमारे गुरुजी है जिनका नाम है ग्रैंड मास्टर चोआ कॉक सुई. उनके 23 साल के रिसर्च के बाद 1987 में फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को इंट्रोड्यूस किया गया अबाउट प्राणिक हीलिंग. क्लियर? एंड आई डिड इन 1997. ओके, सो गुरुजी 2007 में देहांत हो गया उनका. गुरुजी लेफ्ट द बॉडी इन ईयर 2007, but still down the line acharyas and his children and all the pranic healers are continuing with the legacy of pranic healing. और legacy जो pranic healing का है जो आगे बढ़ा रहे, वो सारे acharyas, उनके बेटे बेटी और सारे प्राणिक हीलर्स, हम सब मिलके उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं. व्हाट गुरु? क्या? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. तो फर्स्ट द टाइटल इज, व्हाट इज द टाइटल? टाइटल क्या है? आई वांट टू ब्रिंग चेंज. आई वांट टू ब्रिंग चेंज इन. सो वी वांट टू ब्रिंग द चेंज इन व्हाट? सो द क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या हम तैयार हैं? आर यू विलिंग टू ब्रिंग चेंज इन योर? क्या हम अपने अंदर चेंज यानी परिवर्तन लाने के लिए तैयार है? हेल्थ में, अपने वेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में, या तो अपने करियर में. maybe in the department of our health, which is physical and psychological, our finance, wealth, our relationship, and either business or our career. So Master said, so according to teachings, I am asking you, according to Guru's teaching, if yes, then what is blocking you to bring positive changes in the above? So हमें अपने आप को पूछना है, we need to ask ourselves, what is blocking us? Why I cannot bring change within me? मैं इस डिपार्टमेंट में क्यों परिवर्तन नहीं ला सकता हूँ? क्यों बदलाव नहीं ला सकता हूँ? Like why I cannot do it? So you must have noticed many of you will be very good in certain things, but many of you must have noticed that you are not good at something where you struggle. It's called our weakness. Am I right or not? हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, हम स्ट्रांग है, उसमें हमारी स्ट्रेंथ है,
बट इन सर्टन थिंग वी स्ट्रगल, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, करेक्ट? आप लोग सीरियस क्यों हो गए? Yes or no? So why? Because we are, in some certain things, our will to come out of that weakness, हमारे जो मनोबल है हमारा, वो कहीं कम पड़ रहा है उस कमजोरी को निकालने के लिए. There is a lack of will. Clear? So let's understand. So the question क्या है? Let us focus on the how part of beginning the change using a simple science of energy. So energy का सिद्धांत समझते हैं. Let's understand about the energy, so it become easy for us to come out of these obstacles. हम energy सिद्धांत समझ लेंगे तो ये हमारे लिए easy हो जाएगा. Okay? So let's understand the concept. So first, to understand the energy, let's understand about the different bodies. Okay? एनर्जी को कंसेप्ट के समझने के लिए हम डिफरेंट बॉडीज का कंसेप्ट समझ लेते हैं. सो फर्स्ट इज फिजिकल बॉडी, विच इज कॉल्ड इन हिंदी व्हाट वी कॉल भौतिक शरीर, मींस द वन विच इज फिजिकल, शारीरिक शरीर, दैट इज फिजिकल बॉडी. देन वी हैव एनर्जी बॉडी. फिर हमारा कौन सा है और क्या है? एनर्जी बॉडी, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज ऑरा. इन हिंदी वी कॉल ऊर्जा शरीर. ऊर्जा शरीर इंग्लिश में ऑरा भी बोलते हैं, एनर्जी बॉडी बोलते हैं. नाउ ऑरा इज नॉट आउटलाइन ऑफ द बॉडी. ऑरा कोई ऐसे आउटलाइन नहीं है. ऑरा, एनर्जी बॉडी और ऑरा इज इनसाइड द फिजिकल बॉडी, आउटसाइड द फिजिकल बॉडी. जो हमारी ऑरा है, ऊर्जा का शरीर है, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, वो शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है. So for example, Guruji gave a very beautiful example that suppose if you put sponge in the water, bucket of water, मान लो आपने स्पंज को पानी की बाल्टी में रखा, पानी में. So water is inside the sponge, water is outside the sponge. पानी वो स्पंज के अंदर भी रहेगा, पानी स्पंज के बाहर भी होगा. The same, the body is like sponge, energy is inside, energy is outside. So that is called energy body. So Master said, energy body is like a mold for the physical body. Energy body जो है ना, वो हमारा mold है, physical body के लिए एक mold है. So Master said, if you repair, spiritual science also says, energy science also says that if you clear the mold, it means if you repair the mold, you can repair the body. अगर आप ये energy को repair करोगे तो अपने body को भी repair कर पाओगे. So Master said, how come? Because they interpenetrates each other. ये दोनों एक दूसरे को interpenetrate करते हैं. So what affects one will affect other. जो चीज ऑरा पर असर होगी, उसका बॉडी पर असर होगा. जो बॉडी पे असर होता है, उसका ऑरा पर भी होगा. Clear? Okay. So first, second, we also have another body which is called emotional body. यानी भावनात्मक शरीर, या उसको स्पिरिचुअल साइंस में काम कोश शरीर भी बोलते हैं. काम मीन्स इमोशन, कोश मीन्स सेल्स. हमारा शरीर सेल्स से बना हुआ है, कोश, इसलिए उसको बोलते हैं काम कोश. या तो ऐसा भी बोलते हैं काममय कोश शरीर. ओके, काम मीन्स इमोशन. सो अगेन, इमोशनल बॉडी इज इनसाइड द फिजिकल बॉडी एंड आउटसाइड. So emotional body ऑरा को भेद के बॉडी तक जा रहा है. So now emotional body, physical body and energy body all interpenetrates each other. ये तीनों एक दूसरे को भेद रहे हैं. It means whatever is going to affect the emotional body will affect energy body and physical body, and whatever is going to affect physical body will affect energy body, emotional body. Are you getting my point? हमारा इमोशनल बॉडी शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है. सो जो हमारे इमोशनल बॉडी पे असर होगा, जो इमोशनल बॉडी में हम क्या भरेंगे? इमोशंस. What we will feel in our emotional body? Emotions. And through emotional body we feel emotions. Emotional body से हम emotions को महसूस करते हैं. Clear? Okay.
And then the last one is our mental body, that is मानसिक शरीर या उसको मनकोश शरीर भी बोलते हैं. Okay, so now you can see the rays inside outside. आप देख पाते हो rays दिखा रहे उस PPT में. So what is the meaning? Again, all these bodies, physical body, energy body, emotional body, mental body, all they interpenetrate. It means whatever is going to affect one will affect other. चारों में से कोई पर भी एक पर असर कुछ भी होगा उसका सभी पे होगा, because they interpenetrates each other. Clear? Okay, fantastic. Now let's understand the concept of thoughts and emotion, how it affects our system. अब हम thoughts और emotion के बारे में सीखेंगे जो हम रोज प्रोड्यूस करते हैं. So is there anyone who is not creating any thoughts or emotion? आप में से कोई है जो कोई thoughts emotion प्रोड्यूस नहीं करता है? सर क्या मजाक कर रहे हो? It's not possible ना. How can, why? Okay, can you touch your physical body, please? Can you touch? Say or you just say physical body. Okay, say energy body. Okay, say emotional body. Say mental body. This all together is called mind. ये चारों मिला के हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम? Mind. Mind. Okay, so mind is not here. Here is brain. यहाँ पर brain है. Here is there is no mind here. So mental body, emotional body, three physical, ये सब मिला के उसको बोलते हैं mind. So when we create thought, जब हम thoughts और emotion create करते हैं तो क्या होता है? So when we create thoughts and emotion, this happens. Either it can be positive, it can be negative, right or not? So positive and negative thoughts. So Master said, according to our Guruji, he said, thinking and feeling produce psychic beings which are called thought forms or thought entities. As per GMCK, calling them thought entities more accurate because they are living energies. Okay, so my dear friend, when we create thought, all the bodies are involved in this. जब हम विचार प्रोड्यूस करते हैं ये सारे bodies involved हैं. So it is like this. From mental body, mental energy, emotional body, emotional energy, energy body, energy, and now we have a thought. So it's like a balloon. You have a balloon and you put the air in balloon. So inflate the balloon. So we create thoughts. So thoughts are living energy because it is our own energy. So that is a living energy. Now, if you keep inflating balloon, it becomes bigger, 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 bigger. Okay? What if you stop? अगर आप stop कर दोगे तो, let's say आपने balloon को बहुत हवा दिया, इतना बड़ा बनाया, you inflated balloon, but after 5-7, then after you didn't do anything, कुछ नहीं किया. What will happen after 7, 8, 10 days? This balloon will deflate, na? Yes or no? Right? Same with the thought form. When we create thoughts, and if we continuously think about the same thought again and again, but whenever we create thought, the thought is not plain thought. There is emotion involved in it. So when emotions are involved in it, and then you keep thinking about the same thought again and again and again and again, that becomes the cloud. ऐसा हो जाएगा जैसे हमारा, हमारे बड़े बादल जितना बड़ा thought form हो जाएगा. So Master said, when you create thought, there is an emotion involved. Now, psychological science says, in general, on an average, a human being creates 20 to 60,000 thoughts in a day. 20 से 60,000 thoughts create करता है. And most of them are repeated. Do you agree on this or no? Do you really create 60,000, 20,000 new thoughts? Or most of them are repeated? Most of them are repeated. So if suppose something goes wrong in our job or in our career, do we keep thinking about it or not?
मार्केट डाउन हो गया, फालतू में इसका बात सुना, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाया, सच्ची, यू नो। आज वो मेरी ननंद आई थी ना, बड़ा आग लगा के गई। भाभी ना, मेरी सास ना, मेरा बॉस ना, हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दैट आप लोग बहुत शांति से बैठे थे, बहुत शांति से बैठे थे, पर अंदर घमासान युद्ध चल रहा था। You are quietly sitting, but inside your mind it was like, you know, आजा आजा दिल निचोड़, रात के धड़, and but you are sitting quietly. पर माइंड में ऐसा धमासान आरआरआर फिल्म जैसा युद्ध चल रहा था, ऑफ थॉट्स। और किसी ने मैं आके पूछ लिया, आर यू थिंकिंग समथिंग? नो, कुछ सोच रहा है क्या? नहीं नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस? यस, आई फील सो गुड कि सब लोग मेरे क्लब में है। बाकी 236 में से बहुत कम हाथ, तो मुझे लगा अच्छा ये जो बाकी के लोगों ने हाथ नहीं ऊपर किया ना, उसका रीजन एक ही है, या तो उनको पता नहीं है बटन कैसे चालू करना, सेकंड या तो बहुत शर्मा रहे हैं, थर्ड या तो ये लोग ऑलरेडी इन चीजों से पर आ चुके हैं, या तो इतने सारे हो गए कि अभी उनको कंटाला आ रहा है कि बटन भी चालू रखे। सर अभी क्या बताए हमारी कहानी, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, हमें किसी ने बोला, कुछ सोच रहा था कि नहीं नहीं, तब हम एक्चुअली बहुत कुछ सोच रहे थे। We were thinking a lot when somebody asked us, are you thinking something? No. We said immediately no, without even thinking. Clear? So these thoughts and emotion, and repeatedly. So what happens? Okay, you can put your hands down, and I'm very thankful for all of you who are participating. You know, आप लोग participate करो तो I'm very thankful. You can put your reaction button down, and I'm really thankful. Because I don't want you to listen my lecture. I want you to participate in this. Lecture सुनने में मजा नहीं है. Okay, so now, what are the thoughts and emotions? Okay, positive thought, positive emotion, right? So listen carefully. Now, very important thing before we go further about, you know, the teachings of great ones, Lord Mahavira, Lord Buddha, you know, Christ, so many saints and Mahatmas, Sai Baba. You can take any example of any saints, Mahatmas, and all the avtaras. Uski baat kare, to, you know, they said, like Buddha said, what you think you become. Na? Lord Buddha ne aisa bola na, what you think you become. So they all say, most of everyone say, na, hey, be positive. Huh? You try to be positive. Have positive thinking. But frankly speaking, tell me, how many of you were so positive कि ये टेंडर मेरे पास ही आना चाहिए, I know it will come, I know ये टेंडर मुझे ही मिलेगा, ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आएगा, I know मेरा अप्रेजल होगा, I know कि मैं 97% आएगा, इतना पॉजिटिव, फिर भी नहीं हुआ. How many of you have experienced that? And moment तक इतना पॉजिटिव, इतना तो ऐसा लगता है कि मैं इतना पॉजिटिव तो मैं कभी लाइफ में नहीं थी, तभी नहीं हुआ. I was so positive in my life, still it didn't happen. Have you experienced that? क्या बात है, आप लोग सब मेरे क्लब में हो रहे, वाह. आज तो मेरा शनिवार आज मैं बहुत खुश हो गया हूँ. शनिवार, सफल शनिवार. सर आप हमारे खुशी में शामिल हो रहे हैं, आपके दुख में हमें शामिल कर रहे हो? दो में से क्लैरिफाई कर दो पहले आप. दोनों. Remember aura, inside out. Okay, so now it's like this. Thank you. You can put your hands down, you know. So now think like this. So just for an example, I heard somewhere in one of the lecture, it was very nice, given by this speaker. He said that suppose there are 10 people, you know, in a row,
and they are on the running track. 10 लोग हैं रनिंग ट्रैक पे जो कंपटीशन कर रहे हैं, 100 मीटर्स का रेस चल रहा है, 100 मीटर रेस ऑन अ रनिंग ट्रैक. सो डोंट यू थिंक ऑल आर पॉजिटिव? सब लोग पॉजिटिव है ना. कोई ऐसा सोचेगा मैं सेकंड आऊंगा तो चलेगा, मैं थर्ड आऊंगा तो चलेगा. If I will come second or third, it's okay. Do you think they will think about? They all will think about coming first. Correct or not? सबको first आना है, right? Okay. So they are so positive at the start of the race, but only one person comes first. Na? Who will come first? कौन first आएगा? The person who has more energy and put in action. जिसके पास बहुत एनर्जी है और उसने वो एक्शन में लेके आया है. He has that fuel. So positive thinking, very good. But if you do not have that energy to put on, क्या फायदा? Can you just sit down at your home and say कि भगवान 5 करोड़ की बारिश हो रही है, मैं 5 करोड़ 2000 के नोट नहीं चाहिए, आउटडेटेड होने वाला है, तो भगवान 500 रुपए के ही दे रहा है. पैसों की बारिश हो रही है और पैसों के ढेर पे मैं सो रहा हूँ. मेरे सारे चक्र में पैसे अंदर बाहर, ऑरा, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, सब में बाहर अंदर. और 5 करोड़ देके सब स्टूडेंट मेरे पास आए और मैंने उनको डोनेशन दिया. कितना पॉजिटिव है, माय गुडनेस. दिन रात सोता हूँ, होल डे होल नाइट सोता हूँ. 5 करोड़ मेरे ऑरा में, चक्र में, सेल्स में 5 करोड़, सोते जागते फोटो 5 करोड़ का, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़. डू यू रियली थिंक वो 5 करोड़ मेरी ऑरा, चक्र और मेरे बैंक बैलेंस में ऐसे आ जाएंगे? नो ना, राइट? नो एक्शन ना, राइट? बट if I think negative, then so spiritual science says you be positive. If you don't get success, no problem, but there is a probability of getting success. अगर तुम पॉजिटिव रहोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि सक्सेसफुल बनोगे. पर अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो 100% नेगेटिव रिजल्ट आएगा. उसमें पॉजिटिव शायद कम रिजल्ट आए, शायद ना भी आए. Being positive, you may not get the positive result or you may not succeed. But if you think negative, guaranteed there will be a problem. So why not making ourselves positive and to get the probability of getting success getting higher? What do you say? Yes or no? मैं क्यों पॉजिटिव ना सोचूं? भले सक्सेस कम मिले, बाद में मिलेगा, पर एटलीस्ट मेरा बुरा तो नहीं होगा. एटलीस्ट आई विल नॉट, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे इवन आई विल नॉट फील गिल्ट अबाउट इट कि मैंने ही नहीं सोचा, मैं ही मूर्ख हूं, मैंने ही प्रयत्न नहीं किया. आई डिडंट पुट एनी एफर्ट्स, आई वाज नॉट सो पॉजिटिव अबाउट गेटिंग इट. So if I'm not getting it, at least I say, okay, no problem, I will get next time, but I will get it. But at least by not thinking negative, I didn't put down myself, मैंने नकारात्मक सोच के अपने आप को नीचे नहीं आया और मेरी एटलीस्ट मेरी ऑरा को खराब नहीं किया. Clear? Yes or no? Okay. Now, but sir, then how we can get that success? तो हमें success मिलेगा कैसे? So spiritual science says that you be, so now you get that, you want energy, na? हमने क्या अभी डिस्कस किया? You need energy to work on that, to work on your goals. So let's talk about the energy. So Master said, how you get the energy. When you do breathing exercise, you get energy. When you do meditation, you get energy. Yes, no? You are charging yourself, right? You do yogasana, you get energy. So you do any exercise, you do breathing exercise, you do meditation, you get energy. आप breathing exercise करो, meditation करो, exercise करो, आपको ऊर्जा मिलेगी. So what you need, if you want your body to perform, if you want your mental body to perform, your emotional body to perform, your energy body to perform, you need fuel, you need energy. अगर आप चाहते हो कि मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी काम करे, उसको फ्यूल चाहिए, उसको बैटरी चार्ज रखना पड़ेगा. टू चार्ज द बैटरी we need to do this, हमें ये करना पड़ेगा, right? But sir, मैं ये करता हूं फिर भी नहीं हो रहा है.
बहुत क्या सर, फिर भी अप्रेजल बहुत अप्रेजल मिला, पैसा मिला, बिजनेस में बहुत है लेकिन. So now the question is that why? Sir, I am doing exercise, I am doing breathing exercise, I am also doing meditation. फिर भी मुझे नहीं मिला successful, right? So you ask yourself, we need to ask ourselves. Sorry to say, ask yourself. So we ask ourselves, during you wanted to achieve the success, how long you kept yourself in a positive mind, positive frame of mind? You know, how much you kept, or up to what extent you kept yourself positive. आपने अपने आप को कितनी देर तक पॉजिटिव रखा? So for example, did it happen that you wanted to go abroad, you applied for passport, your passport didn't come, but you were so positive, no, I will get it, but and at last moment you got it, और आपको मिल भी गया. Has anyone experienced something like that? Or maybe ticket, or maybe whatever, something else? Has anyone experienced? I have experienced it. Okay, but suppose if I wouldn't have, मान लो मुझे नहीं मिलता passport, then, but at least I will not having a guilt about that I didn't get. I mean, I didn't try. I was so negative. So I feel like, oh, I was negative now. That's why I didn't get. So my spiritual science says when you are positive, at least you do not spoil your aura. Otherwise, your energy drags. Energy will come down. It will drag you. So Master said, with positive thinking, you can increase the energy also. So what happens? So Master said, when you create thoughts and emotions which are positive, it will attract positive vibration. Clear? So negative thoughts, negative emotions. Okay? So एक experiment करते हैं. चलो, एक experiment करते हैं. Okay? Can you put your hand like this? Can you put your hand like this? Okay. Say, awesome. Thank you. Amazing. Lovely. Okay, repeat the sentence. Awesome. Amazing. Lovely. Thank you. Beautiful. Again. Awesome. Amazing. Thank you. Beautiful. Lovely. Do you feel vibration between your two palms? Now, hold on and say hatred. Hatred, 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 hatred. How many of you felt energy has gone? Can you just raise your hand? Reaction button, reaction button. How many of you felt the energy has gone? How come? It means Guruji says, Guruji says, thank you. And those who are still giving reply, thank you so much for your feedback. So what Guruji said, that when you think positive, you create that energy which is positive. So your aura is full with positive energy. When you think negative, your aura get filled with negative thoughts, emotion, the energy will drag. Like you say hatred, energy has come down. So energy has not vanished. Energy का नाश नहीं हुआ है. That the energy, the positive energy has turned into dirty energy, solid dirty energy. Okay, now think about it. How many times in a day we say wrong words like stupid, rascal, nonsense, idiot? Whenever something goes wrong, how many times you said yourself, I am only the idiot. मैं एक stupid हूं. I am the stupid. Have you experienced that? Is there any stupid present over, including me? नहीं सर, हम लोग इंग्लिश वाली नहीं बोलते, हम लोग हिंदी वाली बोलते हैं. उसमें भी ऐसा होता है क्या एनर्जी? हिंदी वाले में जल्दी होता है. Thank you. So the thing is that when we say certain negative words, it affects our aura. So the moment we say those words, the aura, the energy level goes down. So it is something like, our battery comes down. Now with a low battery, can you perform? Can you perform with the low battery? Low battery se perform kar payega? No. With a low battery, you will have a low performance. As simple as that. Correct? Okay.
So let's understand that. So we did this experiment. Now, so in day-to-day life, we generate certain thoughts and emotions which can, bring, we may, because of our, because of our wrong action, we injure other people. हमारे रॉन्ग एक्शन से हम लोगों के बारे में गलत सोच डाल के उसको भेजते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दैट certain political issue comes and then we automatically start criticizing them? Have you experienced that? हम बिना मतलब criticize, right? Injuriousness. How many of you experience that you still आपके माइंड में प्रोग्राम चल रहा है कि मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, मेरे हस्बैंड, मैं 108, या कितने के हस्बैंड ने ऐसा बोलते हैं, मेरी वाइफ है ना वो समझती नहीं है, मेरी वाइफ मैं समझ सकता हूँ आप लोग घर में इसलिए हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ आपकी कंडीशन, समझ सकता हूँ. आप वो पोजीशन में नहीं हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में नहीं हो, न्यूट्रल पे खड़े हो, शायद म्यूट भी कर दिया होगा आपने. सो द थिंग इज दैट कि हमारे अंदर एक प्रोग्राम है हमारे घर वाले को लेके. वी हैव अ सर्टेन प्रोग्राम, certain program in our office, certain program related to business, certain program अपग्रेडेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है, आइडियाज अपडेटेड नहीं है बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वो अपडेटेड ही नहीं है. सो वी कीप ऑन जनरेटिंग सर्टेन थॉट्स. सो व्हाट हैपन, वी कीप ऑन इंजरिंग अदर्स. सो इसीलिए हम किसी के अंदर नफरत के बीज डालते हैं, किसी को निराश करते हैं, किसी को बार बार टोकते हुए उसका खुद का सेल्फ एस्टीम लो करते हैं, बिकॉज ऑफ हमारी एक्शन की वजह से उसका हो गया. Some people they lose their temper and they start behaving funny and they feel like I'm dumb or what, this guy keeps on hammering me, and फिर उदास होते हैं. So in day-to-day life, this all of us may experience. Why? Because we are in the ocean of thoughts and emotion. हम उस ocean of thoughts और emotions में हैं. We release thoughts and emotion in our house. We release thoughts and emotion in our office. We release thoughts and emotion in our business premises. We release thoughts and emotion wherever we go. So our entire city, our entire world is full of thoughts and emotion. And we absorb. हम जहां जाते हैं हम थॉट्स और इमोशन को रिलीज करते हैं. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. थिंक अबाउट इट. दुकान में, घर में, बिजनेस की जगह में, हर जगह पर जाते जाते हम थॉट्स एंड इमोशन. सो मास्टर सेड वी आर इन द ओशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस. क्लियर? So what if you come in contact with the positive person? How many of you notice that you come in contact of positive person, the person has inspired you, motivate you, person has brought that enthusiasm in you and you started doing something good. आप लोगों में से कितने लोगों ने महसूस किया कि किसी के पॉजिटिव संपर्क में आए, किसी की बातों से आपका उत्साह बढ़ा, आपका जज्बा बढ़ा, आप खुद उत्साहित हुए, प्रेरित हुए, मोटिवेट हुए कुछ अच्छा करने के लिए, एंड इट ब्रॉट रियली चेंज इन योर लाइफ. ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत ही कम लोगों के साथ हुआ है. धनबाद हमारे जो आप हमारे सेशन में पधारे, राइट, अमेजिंग. सो व्हाट हैपेंड कि हमने ऐसा किया और राइट. सो नाउ ओके, यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. सो is it possible to stay with that person who brought that positivity in you? नहीं. Is it possible to be with that person 24/7? ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि आप जिस व्यक्ति ने आपके अंदर आपको उतना उत्साहित किया, प्रेरित किया, आपकी प्रेरणा दी, आपको मोटिवेट किया, मतलब पॉसिबल है कि आप उनके साथ रहो? डेफिनेटली नॉट. क्या हो सकता है कि वो उसके कांटेक्ट में बाहर 24/7 रहो, भले उनके साथ ना रहो, 10 घंटा रहो?
पॉसिबल नहीं है, राइट? सो व्हाट? सो जस्ट अ मिनट. सो स्पिरिचुअल साइंस इज excellent. So spiritual science says, for example, is it possible for all the disciples of Lord Buddha to stay with Buddha? Is it possible? था वो ऐसा? Is it possible कि महावीरा के जो डिसाइपल थे उनको हमेशा महावीर भगवान के साथ रहने मिलेगा? नहीं. साईं बाबा. So like that. So is it possible कि जब गुरुजी जिंदा थे तो सबको गुरुजी के साथ रहने का मौका मिला? नहीं. Yes or no? Correct or not? Amazing, fantastic. Now सारे संत महात्मा ने बहुत सारी किताबें लिखी. लॉर्ड बुद्धा ने लिखा है धम्मपद. जीसस रोट बाइबल. We have a Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita. Yes or no? These are the fantastic book, inspirational book. Yes, no? All-time favorite book, bestseller. Now, how many of you have read one bestseller book, but after some time you forgot the name of the book? आप में से कितने ने अनुभव किया कि आपने बेस्ट सेलर का एक बुक पढ़ा पर कुछ टाइम के बाद आप भूल गए? यस, बेस्ट सेलर का. यस. How many of you? Please raise your hand. Thank you. Amazing. Thank you. You can put your hands down, please. Okay. Now, how many of you have read a portion of Bhagavad Gita or Mahabharata or you know something और आप भूल गए? ऐसा हुआ? भूल गए आप? नहीं भूले. क्यों नहीं भूले? Why you didn't forget Bhagavad Gita का सार? क्यों हम जो those who are Christian, why you are not forgetting Bible? Those who are Hindus, why you don't? I mean, why still Mahabharata is there in your mind? Ramayana is still in your mind. Those who are following Islam, क्यों कुरान अभी भी दिमाग में है? Why? Because these are the books written by the great ones, and the written words has the energy of them. उन्होंने जो लिखा है ना, वो उस किताब में उनकी वो एनर्जी है, and they are the one उन्होंने डाउनलोड किया है from God. So Lord Buddha उनके टीचिंग में वो एनर्जी है. Lord महावीरा उनके टीचिंग में वो एनर्जी है. You say Valmiki Ramayana, energy is there. Mahabharata, energy is there. Bhagavad Gita, energy is there. So spiritual science says, if you cannot be with the teacher, be with the teachings all the time. आप टीचर के साथ नहीं रह सकते हो 24 घंटा, पर गुरुजी के टीचिंग के साथ, इन महान लोगों की टीचिंग के साथ आप 24 घंटा रह सकते हो. So be with the teacher, you be with the teaching. Simple. टीचिंग्स के साथ रहना है. So when we download, पर सर हम टीचिंग के साथ कैसे रहे? मतलब कल से मैं जब सो जाऊंगा तो बुक को तकिए के नीचे रखूंगा. Sir, when I will sleep, I have to put the book in below my pillow. No, my dear friend, it means खोपड़ी में भरना है. We have to install here. We have to start practicing. That will bring the change in our system. That will bring change. वो हमारे अंदर बदलाव लाएगा when we download this positive energy. When we download the teachings of Bhagavad Gita, when we download the teachings of Dhammapada, Quran, Bible, all the teachings, when we download, we bring change. हमारे साईं बाबा की स्टोरी है. साईं बाबा से ना, जीसस क्राइस्ट को खिले मारे गए. जीसस क्राइस्ट वाज हैंग्ड, ना, nailed, right? But what Jesus Christ said, God bless them, they don't know what they are doing. जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला? भगवान इनको माफ कर दो, इनको पता नहीं क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं. साईं बाबा, he was a miraculous saint. He lighted the lamp, ना, पानी में दिए जलाया ना. सुना है साईं बाबा का स्टोरी?
उन्होंने पानी में दिए जलाए. He lighted the lamp in the water because there was no oil available on the day of Diwali. दिवाली के दिन में नहीं था. और साईं बाबा सच miraculous person, miraculous saint, इतने बड़े संत महात्मा, ओके. और उनके पीछे उनको कितना वो लोग बुरा भला बोलते थे. यस और नो? कितना गंदा बोलते थे साईं बाबा के बारे में, कितना गंदा बोलते थे, षड्यंत्र करते थे. They used to do planning and plotting against Sai Baba, but Sai Baba never reacted, never retaliated. Have you ever seen in the story कि साईं बाबा ने जाके कुछ बोला होगा, उनको बोला होगा, रिटालिएट किया, या उन्होंने क्या कि ये मेरे साथ आप क्या कर रहे हो, या उन्होंने भगवान को कंप्लेंट किया ये क्या है, ये मेरे जिंदगी में ये लोग कहाँ से आ गए. राइट. ऑर्डिनरी आदमी होगा ना, ऑर्डिनरी आदमी ये करेगा. ऑर्डिनरी आदमी के पास पावर होगा ना तो ये करेगा. वो बताएगा तेरे को पता है ना मैं कौन है, हाँ पता है ना मैं कौन है, मैं लास्ट ईयर क्या किया था दिवाली पे, पानी में दिए जलाए थे, पता है मेरे मैं क्या करता हूँ, पानी में दिए जलाए थे. मेरे से ज्यादा वो नाटक करना मत. 70% तेरे बॉडी में पानी है, लगाओ मैं अभी पानी में दिए जलाए, बॉडी में आग आग लगेगा अभी, मेरे से पंगा मत लेना. ऑर्डिनरी व्यक्ति ऐसी बात करेगा. संत महात्मा को कभी ऐसी बातें करते सुना है? संत महात्मा को हम कभी नहीं सुना. We'll never listen, we'll never heard this type of things from Sant Mahatma. They are on the greatest level. So despite of all the odds, they have the teachings with them. इतने सारी चीजें होने के बावजूद उनके पास वो टीचिंग्स जो है ना, वो उनको पकड़ के रखा है. नहीं, माफ कर दो, माफी दे दो, जाने दो, छोड़ दो उसको. Are you getting my point? So Master said, spiritual science says that you cannot be with the teacher, no problem, because it's not possible. Be with the teachings. Be with the teachings. जब तक हम वो टीचिंग डाउनलोड नहीं करेंगे, हम सर्वाइव नहीं कर सकते. We need to remain positive. We need to change our ideas. We need to change, thinking on our relationship. We cannot have relationship with, we cannot have a good relationship, and we keep on criticizing our, husband or wife, spouse every time. मैं क्या बताऊं, मेरे हस्बैंड सुनते ही नहीं है, कभी मेरे सुनते ही नहीं है. क्या बताऊं, ये सुनते ही नहीं है. Do you think our relationship will become better when we keep on saying ये सुनते नहीं है? Do you think that if you keep on criticizing your wife that मेरी वाइफ इसको कौन समझाएगा, इतना कौन समझाए, सच्ची कौन समझाएगा, कौन क्या समझाएगा, तू ही समझाएगा. So do you think with that attitude, कौन समझाएगा, we have a good relationship with our spouse? Will we get a good relationship with our daughter or son? If you are saying going to criticize him, मेरे इसको क्या समझाओ, ये लोग आजकल के कॉलेज के ना पूरा दिन मोबाइल लेके घूमते हैं, कोई मारना पड़ेगा. Do you think with this language and this shouting, we will have a good relationship with our daughter and son? No. We need to ask ourselves, did I bless my son and daughter or no? क्या मैंने मेरे बेटे या बेटी को रोज ब्लेसिंग दिया कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, उसको ज्ञानी बनाओ, उनकी सारी आदतें बदले और वो अच्छा परिवर्तन लेके आओ? क्या बताओ सर, बहुत किया, 3 दिन से मैं रोज ब्लेसिंग कर रही थी, कुछ नहीं हुआ. मोबाइल छोड़ता नहीं हाथ में. सर आपको पता नहीं, एक बार मेरे घर पे आके रहो, देखा पता चलेगा आपको क्या क्या करता है. You bless only 3 days and you curse for next 30 days. 30 दिन उसकी बुराई की. क्या बताओ, पढ़ता नहीं है. सच में बोलना, ब्लेसिंग ज्यादा दिया था या कर्सिंग ज्यादा था? मतलब उसको कितनी बार क्रिटिसाइज किया आप लोगों ने? क्रिटिसिज्म ज्यादा था, ब्लेसिंग कम पड़ा. that is our fault. मतलब do you think with this thinking, with this thought, our child is going to progress, our family member is going to progress? My dear friend, this is called psychic attack. इसको बोलते हैं psychic attack. कोई जंतर मंतर बाहर मार के बैठा नहीं है. There is no one to, there is no source or sir, तांत्रिक बैठा है जो आपके पीछे पड़ा है. हम ही तांत्रिक है हमारे फैमिली के लिए. We are the one. कोई ब्लैक मैजिशियन नहीं है, काला कपड़ा पहन के बैठा वही हो सकता है दूसरे के लिए, और कोई नहीं हो सकता. हम अपने परिवार के लिए ऑब्स्टिकल बन सकते हैं. हम हमारे परिवार को रोज बोलते हैं इसका कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ नहीं होने वाला. कैसे होगा उस बेचारे का कुछ?
We need to change ourselves. How many times how many times you look yourself in a mirror and you want to change yourself? थोड़ी मोटी हो गई ना मैं, अब कम करना पड़ेगा, मेरे बाल में स्प्लिटन आ गया. You are criticizing your body, you are criticizing your hair 10 times in a day, and you are expecting everybody to praise you. क्या बाल है आपके? You yourself is not happy with yourself. आप अपने आप से खुश नहीं हो, अपने बाल से, अपने पेट से, अपने बॉडी शेप से, अपने स्किन से, अपने कलर से, अपनी आंखों से, अपने आईब्रो से आप खुश नहीं हो. तो डू यू थिंक अदर पीपल विल लुक एट यू एंड विल हैप्पी? अरे क्या सुंदर लगते हो आप, वाओ, यू लुक सो हैंडसम. वो हैंडसम आदमी खुद को हैंडसम नहीं समझता है, तो दूसरा हैंडसम उसको कैसे समझेगा? We need to change our attitude first ourselves. कि नहीं, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं, भगवान ने जो मुझे स्किन दी है, मुझे आंखें दी है, मुझे बाल दिए है, मुझे शेप दी है, बॉडी दिया है, इज ए टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट. जो दिया अच्छा ही दिया है. आई नीड टू बिकम अ फैंटास्टिक सोल. मैं क्यों रोज अपने बारे में गलत सोचता हूँ? क्यों मेरे परिवार के बारे में गलत सोचता हूँ? क्यों मेरे बेटे बेटी के बारे में गलत सोचता हूँ? क्यों मेरे माँ बाप के बारे में गलत सोचता हूँ? Why I keep on thinking wrong about my employee, my father, my mother, and then I want to progress in my life. How we can progress in life then when we are thinking 10 times bad about our own family members? 10 बार तो दिन में अपने फैमिली मेंबर के बारे में गलत सोचते हैं. कैसे पॉसिबल है? These are the all obstacles. There is no one outside, sitting outside our home, having the camera, CCTV camera on our business and say, शालीन भगत का business में तोड़ डालेगा. There is no one outside. कोई नहीं है बाहर. मैं खुद ही अपने बिजनेस को तोड़ सकता हूँ, बिकॉज माई थिंकिंग इज रॉन्ग. आई एम नॉट अपग्रेडेड. मैं नहीं सोचता हूँ कि मुझे कैसे बिजनेस करना है. मैं अपडेटेड नहीं हूँ, मेरे आइडियाज गलत है. और फिर अगर आइडियाज गलत है तो एक्चुअली મારા હસબન્ડ બિચારા બહુ મહેનત કરે છે, પણ અમારે છે ને કોઈ છે ને કાળું ધોળું કરે છે. एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा करते हैं, पर कोई है जो ब्लैक मैजिक करता है. कोई ब्लैक मैजिक नहीं करता है मेरे बहन, कोई नहीं कर रहा है. अपनी थिंकिंग अपने पर ब्लैक मैजिक कर रही है. अपनी थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अपनी सोच गलत है. वी आर थिंकिंग रॉन्ग अबाउट अवर सेल्फ. वी आर थिंकिंग रॉन्ग अबाउट अवर ओन बिजनेस. हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे वी थिंक अबाउट बिजनेस? ये भगवान, सच्ची ये दिवाली आ रही है ना, मुझे लगता नहीं कुछ होगा. अरे क्यों नहीं होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? Whatever thoughts and emotions we have put in our aura, that is a problem. So we need to repair it, which is called program, pattern. So according to psychological science, this energy goes in this. So according to yoga system, we have a chakras. These are absorbed. Now these chakras control physical and psychological function, both. So when it goes in, it becomes our pattern or program. You know, it's like in our computer, we have a pattern or program. Our program is there, हमारे computer में. Same, repeated thoughts, repeated emotions become pattern or a program. Repeatedly, बार बार उस सोच को लाके वो pattern बन गई, program बन गया. Clear? So in our aura, we have this chakras and certain. So let's say somebody is getting angry. मान लो कोई गुस्सा हो रहा है. So what kind of emotion, energy will be there in chakras? Anger. Correct? Right? So anger. So what will happen? So chakras are filled with dirty, angry energy. Angry. Gussa. So the chakras will become congested and overactive. Right? Okay, next. Okay. So what Master said, if the person gets calm and forget the instant, the energy of the anger dies out on its own after some time, as it doesn't get fed with similar energies. So गुरुजी क्या बोलते हैं? मान लो आप थोड़ा गुस्सा हो गया, अपने बेटे के प्रति होमवर्क नहीं किया, अपने एम्प्लॉय के प्रति, because he didn't work. Okay, but you didn't feed the energy. Remember that inflating balloon? आपने उस बलून में ज्यादा हवा नहीं दिया. So what happened? Your thought form of anger dies. आपका जो गुस्से का थॉट था वो अपने आप, क्यों? Because you didn't feed it. आपने उसको फीड नहीं किया उसको. Simple. So Master said, when you are master of your mental body, emotional body, you can do it. अगर आप अपने mental body, emotional body पे आपका मास्टर ही है, you can do it. You can stop yourself. Wait.
I should not be now unnecessarily more angry on this. एक बार मैंने बोल दिया ये मत करना, बस that's it. No need to shout, no need to yell. ये सब बार बार सोचना नहीं है. So when you have a control, you don't feed the anger thought form. Anger thought form को आप feed नहीं कर रहे हो, अपने आप वो नष्ट हो जाएगा. Correct? But what if it remains there? अगर वो रह गया तो क्या होगा? Right? So what happens? If person continues for a longer time, तो क्या होगा? Aura is getting populated with all these angry thoughts. Anger, पूरे aura में भर गया. Right? So now which frequency we will attract? तो हम कौन सी frequency को attract करेंगे? It affects your physical and psychological, right? All the chakras are affected with anger energy. Stress. Now you are angry, you have a stress, anger की वजह से fear आया, anxiety आ गई. So now you have several thoughts, emotions. तनाव आ गया तो गुस्सा आ गया, तनाव आ गया, fear आ गया, anxiety आ गई. So all this is flooded in the aura and chakras. Okay. So now, with these thoughts and emotion in the aura, can you see the road clearly? If you are wearing a dark glasses with so many these black holes, will you able to see the road clearly? Will you able to drive clearly? Obviously, the answer is no. So if we have these thoughts and emotion in the aura, the first thing what comes out of our mind whenever there is a problem is what, I'm actually confused. What should I do? जब हमारे ऑरा में ऐसे थॉट्स और इमोशन रहेंगे ना, जब भी हमारे सामने लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ना, तो पहला शब्द मुंह से क्या निकलेगा? मैं इतना कंफ्यूज हूं, मैं क्या करूं? काम करता हूं, इनको फोन लगाता हूं मेरे फ्रेंड की ऑरा इतनी अच्छी है, इतनी मस्त है, फ्रेंड आपको सलाह सूचन दे रहा है, जिसकी ऑरा खुद की बराबर है नहीं. कर ले रे, कुछ नहीं होगा, डाल पैसा लगा दो, 50,000 वो शेयर ले ले, वो कंपनी का अच्छा है. अरे ले ले, वो भी डूबेगा, दूसरे को भी डुबाएगा. क्यों? जिससे आपने सलाह मांगे उसका ऑरा का ठिकाना नहीं है, वो फ्लडेड विथ थॉट्स एंड इमोशन, वो खुद अपनी लाइफ में जूझ रहा है. डू यू थिंक दैट दिस पर्सन विल एबल टू हेल्प यू? ये ऐसा है ना, जो रास्ता खुद भटक गया है, वो रास्ता किसी को और को क्या बताएगा? The one who already doesn't know where to go in the life, you ask them, what should I do? Do you think you will be successful? No. So Master said, what you do? You sit down and clean your aura. That we learn in pranic healing. Every day we are supposed to clean ourselves, self-healing. We also need to learn the pattern to disintegrate thought forms. Pattern को तोड़ने के लिए समय लगता है. So we need psychotherapy healing. So when you do, that's why Master bifurcated in 3 courses: basic course, advanced course, psychotherapy. You work on yourself. आप अपने आप पर काम करो, अपने घर की एनर्जी को क्लीन करो, अपने बिजनेस की एनर्जी को क्लीन करो जो नकारात्मक विचारों इमोशन से भरी है. So when you go in your business premises, you are not flooded with negative thoughts and emotion. You are flooded with good thoughts and emotion. When you start working in your cabin, you feel fresh, you feel good, because you are now in a fresh thoughts, divine thoughts. Clear? So we need to clean our aura on a regular basis. You can't keep your aura dirty. हम नहीं रख सकते उसको. Then it will pile up. बढ़ते जाएगा. Right? Now, so this chakras, aura, so dirty, what will happen? The person get physical disease. Why? Because this energy goes to the organs. ये organ में जाएगा और वो organs malfunction करेगा. Organ malfunction करेगा तो obviously disease होगा. Organs will malfunction and the person will get disease. Correct or not? Right? Okay. Then, so all this, internal organs are affected. So what will happen? Difficulty in breathing, diabetes, digestive disorder, hepatitis, gallbladder, gallstone, high cholesterol, heart ailment, dirty blood ailment, cancer, psychological, stress, very angry, hatred, anxiety every time, violence thought, aggression, irritation, always worrying, fear. All this happens. Right? Okay, next. Selfishness also comes. People become selfish. Addiction.
people start, taking alcohol and drugs and all those things, right? So okay, now let's understand about the consciousness of the energy body. So Master said, your physical subconscious mind commands to your chakral subconscious mind. This chakra commands to organ, and this organ commands to our cell. Okay, this is how it function. ऐसे function करता है हमारा physical subconscious mind. Means we understood ना, aura, emotional body, mental body, ये हमारे चक्र को command करते हैं. चक्र का subconscious mind वो organ को, organ cellular level पे. So that's the reason our entire action, हमारे सारे action हमारे body level पे physical और psychological हमें affect करते हैं. It affects us on a physical and psychological, both the levels. Clear? So that's the reason, certain people keep thinking negative, they get that problem. But when they alter that thought pattern, जैसे वो thought pattern को alter कर दिया, they start getting result. That's the science behind positive affirmation. उसी के behind वो science है ना, positive affirmation का science वही है. When you start saying positive, I am happy, I am healthy, I am strong, I am enthusiastic, I am generous, I am very powerful, my body is very strong, I am beautiful, I am handsome, I am courageous, I am dynamic. When you say all this good, you generate a lot of energy so that your fear, your anxiety goes out. That's the science behind positive affirmation. जब हम positive affirmation बोलते हैं तो हमारे अंदर के नकारात्मक जो चीजें वो निकलती है. क्यों? पॉजिटिव भरती है रोज. Clear? Okay. So one, you become positive by saying positive words towards self and do healing every day. Self-healing. Clear? Okay. So Master described very well that जैसे हमारा बिजनेस हाउस होता है ना, उसमें डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव होते हैं. वो कमांड करते हैं मैनेजर को, और मैनेजर कमांड करता है डिपार्टमेंट को, पर्सनल डिपार्टमेंट को. राइट? सो सेम विद द फिजिकल सबकॉन्शियस माइंड, चक्र को कमांड करता है चक्र ऑर्गन को, ऑर्गन सेल्स को. क्लियर? Okay. So cells, now many a times what happen, the cells receive the command. So for example, हमारे liver के cells है वो 3 हफ्ते में बदल जाते हैं. In 3 months, the liver cells are replaced and the new liver appears. Large intestine, the cells of the large intestine get replaced in 3 days, like 72 hours. 72 घंटे के अंदर large intestine के cells replace होके नए आ जाते हैं. Same with the stomach. Stomach के cells replace होके नए आ जाते हैं. Stomach cells are also get replaced, and in 72 hours you get the new stomach. Now the question is that if it is new stomach, new large intestine, new liver in 3 weeks, then how come people get cholesterol problem for years? How come there is a tumor in the liver? Still person cannot, because it's already new liver. Why new large intestine? Then why people suffer from constipation for years? अगर नया large intestine हो गया है तो व्यक्ति को constipation कैसे हो सकता है सालों साल? कैसे acidity रहता है? 3 दिन में तो acidity चला जाना चाहिए. Acidity should go. Then how come it continues? The science behind it is what is the science behind it? Master said, when these old cells are replaced by new ones, जब पुराने cells जाते हुए नए cell आते हैं, they transfer the memory to new cells. Old cells, new cells का memory transfer करते हैं. भाई साहब को constipation है, छोड़ना नहीं. Continue. इनको एसिड बहुत पड़ता है, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू कर. like पुराना एम्प्लॉय जाते जाते बोलते थे, मैंने बहुत काम किया, आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट आई डिडंट पेड ऑफ. मेरा अप्रेजल ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा मेहनत करना नहीं, ज्यादा काम करना नहीं. अंडरस्टूड? आई हैंड ओवर. सो द एम्प्लॉय हैज हैंड ओवर विथ ज्यादा काम नहीं करना, ट्रांसफर करके गया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो न्यू सेल्स गेट द मैसेज, इसको कंटिन्यू करो. सो व्हेन वी डू हीलिंग, we remove the program of the cells. जब हम healing actually करते हैं ना, तो उसका program निकलता है and the people get well in 1, 2, 3, 4 days. Acidity gone, constipation gone, liver cholesterol control. Because of this, हम जब clean करते हैं, प्राणी cleaning करते हैं, that energy comes out. The
energy, the program in that cell, in that energy is comes out. That is the science behind pranic healing. Clear? Okay, next. Now, so Master said, as we discussed before, the Lord Buddha said, the mind is everything. What you think, you become. So if you have a negative thoughts, the aura would be like this. But if you have a positive thought, the aura would be like this. So what is the meaning? As simple as that, Master said, if you cannot be with the teacher, or a person who is very positive, very enthusiastic, no problem, be with the teachings all the time. अगर आप कोई टीचर के साथ या कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ बार बार रह नहीं सकते हो, पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई बात नहीं, पर जो इतने महान महान ग्रंथ है, उनकी जो टीचिंग्स है, उसके साथ जियो. So when we learn pranic healing, when we doing healing ourselves, we come out of that physical problem, psychological problem, we have a better relationship, we have a better finance. But one has to learn. Many people said, sir, I did basic pranic healing course, but I don't practice. No problem. So what's wrong? But sir, हमने practice नहीं करते. No problem. At least you do healing for yourself. आप अपना self healing तो कर सकते हो. Sir, time नहीं है. Time नहीं है ना sir. But sir, मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है. पर time नहीं. So ask yourself, do you want to bring change in your life by saying time nahi hai? Or you really want to bring the change in your life by putting all the efforts? You know, हमें बहुत अच्छा लगता है कि 1 साल होने के बाद people achieve their goal and people say, yeah, you know, we have purchased a new house and wow, and now you feel guilty about it. पूरा साल निकल गया रे, अपना घर कब होगा? Now suddenly you got up. टाइम नहीं है मेरे पास. The difference between the person who is successful and the person who is not getting success is the successful person does everything to, you know, achieve the goal. Unsuccessful person have all excuses available not to do that. अनसक्सेसफुल व्यक्ति को सारे एक्सक्यूजेस अवेलेबल है नहीं करने के. सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढेगा. फॉर एग्जांपल, may I have a liberty to choose one person? अर्चना अमृत, is it okay if would you like to become volunteer? नहीं, उसने पहले ही हाथ रख दिया. सर ने कहा मेरा नाम दिया. नहीं ना, थैंक यू. अनम्यूट. Okay. So Archana, do you do exercise regularly? Yeah, ever since I started internship, I used to do it regularly, and my job was like, I was a chef, so I interned as a chef as a part of my college. So I had to stand and run around for 16 hours. So उसमें हो जाता. इसमें हो जाता है. Don't do exercise ऐसा नहीं ना, ज्यादा नहीं ना, मतलब not you are going here and there, but not physical exercise as a part of life नहीं है, right or not? Yeah, fantastic. So right now your job is there. You are already doing job na, as a chef. No, I finished my internship like last week. Okay. Then so if you I have good to hear that. If you do, you know, there is offer for you. If you do 1 hour physical exercise, I am ready to give you a job. पर 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा. Will you do or no? Okay. Condition है, if you want a job, you know, you will have to do exercise 1 hour every day. हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा, 1 घंटा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिर काम चालू करना पड़ेगा. Will you do or no? Yes? Yeah. चॉइस नहीं है ना, क्या करे? जॉब का सवाल है. थैंक यू. और एक को ढूंढता हूं मैं, देखो. जस्ट होल्ड ऑन. मेल कैंडिडेट कौन है? राघवेंद्र. Would you like to become volunteer, राघवेंद्र जी? Unmute. यस सर. राघवेंद्र जी, आप क्या करते हो? बिजनेस करते हो, जॉब करते हो? नहीं सर, मैं जॉब करता था.
मगर Yeah. मेरा अभी लॉकडाउन के बाद मेरा कंपनी बंद हो गया. No problem. Chalo, God bless you. You get job soon. God bless you. Yes. Now, so where are you located, Raghavendra ji? Kochi. डोंबिवली सर. Dombivli, Mumbai, Mumbai. Yeah. Fantastic. मुंबई. तो देखो, मेरे घर पे 50 लाख रुपया पड़ा है. So 1 घंटे में पहुंच जाओ, ले लो. So what you will do? सर, डोंबिवली से बहुत दूर पड़ता है हमको. 1 घंटे में कैसे पहुंचेगा? बहुत. Are you going to tell me all this? और आप सीधा Zoom बंद करके भागोगे? No sir. And the middle, by the time you reach, वो आप पहुंचेगा. सर अभी पहुंच रहा हूँ. सर रुको सर, अरे रुको सर रुको, पहुंच रहा हूँ सर. सर रुको एक मिनट. ये सुन ये, वो वृद्धाश्रम सोसाइटी में जा, रामबाग लेन. हाँ सर, मेरा उधर 50 लाख लेना है. भाग चले भाग. You will put all the efforts to get that 50 lakhs rupees. क्यों? Because 50 lakhs rupees है ना. Yes or no? Yes. So अपने गोल को इतना बड़ा बना दो ना कि अपने अंदर अपने आप मोटिवेशन आ जाए. Our goal should become ऐसा विजुलाइज करो कि मुझे ये हासिल करना है, तो अपने आप वो ताकत आएगा. क्योंकि अभी वो बड़ा हासिल करना है, छोटे में मजा नहीं आ रहा है. Yes or no? आपको Yes, बोलेगा, right. you know, हम लोग स्कूल में थे ना, तो we were getting chocolates. Those will come on Saturday, you will get the chocolates. Those will come on the time on the tuition, you will get the chocolates. अभी बच्चे को बोले, you come on the time on the tuition, you get chocolates. I am not interested. क्यों? अरे उसको रोज चॉकलेट क्या कैडबरी खा रहा है, तो उसको क्या चाहिए? Okay, if you come on the time on the tuition, एक दिन होमवर्क नहीं करोगे चलेगा, एक दिन होमवर्क नहीं करोगे चलेगा, let's go. कितना बड़ा मोटिवेशन है. Right? So you ask, thank you Raghavendra ji for participating. So you ask yourself, do you have any motivation? Do you have any motivation to do anything in your life? So you need, Master said, how come you get motivation? You get motivation through surrounding with the good people in your company. So my dear friends, we need to have a good company. That's the reason when you go to center, healing center, you are flooded with that positive emotion, positive thoughts. You meditate, you are in a good company. You go to temple. So in ancient time, temple was there. People worship there. People go there. There is an energy of devotion, faith. People feel good, visiting temple. They go to mosque, church. They do prayer. They get all the positive energy. They get devotion. They get faith. So we need to bring certain things in our life to bring change. We need to put everything in action. We need to meditate. We need to do healing. We need to learn healing to take it out. All negative thought. Who is going to clean negative energies from your house? How many times people will come and do for us? कितने बार लोग आएंगे? Yes or no? So for example, suppose if your house is dirty, let's say house is dirty, what will happen? If the house is not, repaired for so many days, so many, clean nahi kiya, there will be so many germs and all these things. Yes or no? Would you like to stay in this kind of house? आपको पसंद होगा? कीड़े मकोड़े से घर भरा है. Will you like that? Nobody likes. Do you think God is going to stay with us? Do you really think God is going to stay in us with this kind of chakras and aura and anger and frustration and irritation? God will say, नहीं रे, बहुत बेकार पास आ रहा है. I do not want to stay with you. I am so sorry. तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ना, वो लीवर में से बहुत बैड स्मेल आ रहा है, और तेरा लार्ज इंटेस्टाइन में जो तेरा वो कॉन्स्टिपेशन के गैस जमा हुआ ना, I don't like to stay there. नहीं रे, I am not coming in you. So with our dirty thoughts, dirty emotion, ये चक्र में वो God is not going to stay with us. अरे भगवान का एनर्जी नहीं रहेगा तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगा कहां से? भगवान का साथ ही नहीं है. God is not there with us. So where we are going to achieve the success? So to bring the energy of God, we need to meditate. We need to do something purification. We need to do something good to impress God. Right? So clean house, what will happen? It will attract good energy. So we need to learn to clean our house. We need to clean our house. We need to learn those things to clean our house.
That's how what you learn in pranic healing. Clean negative energy within your house. Clean negative energy within the chakras. Replace it. Sir, मैंने practice नहीं किया. अरे, we have a follow-up session to practice. Why don't you come on Zoom and practice with us? We have a recorded session for the follow-up session. If you are even working then, we have a recorded sessions are there to do self-healing. Right? So my dear friend, it is always possible if we want to do it. अगर हमें करना है तो पॉसिबल है. सर वो सैटरडे संडे 3 सैटरडे संडे आना पड़ेगा. लाइफ में चेंज चाहिए ना तो हर सैटरडे संडे आना पड़ेगा. If we think that lot of excuses are available. एक दिन ऐसा आएगा ना, लोगों में ऐसा आता है कि जान पे बनाएगी ना तो आदमी फिर वो भागेगा, दौड़ेगा, फिर हर दरवाजे को ठोकेगा वो, क्योंकि जान पे बनाया. Now I can't, so I have to do something. पानी इधर तक आएगा ना तब आदमी बाहर आता है. अरे पानी इधर आ गया. So why we want in our life कि मैं इतने ट्रबल से गुजरूं, फिर मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को निकालूं, इतने नेगेटिव से निकलूं, फिर मेरे घर की एनर्जी को साफ करूं. Why we want to wait? Clear? Okay, that's it. Sorry for taking 20 minutes more. Hope you enjoyed the session. Just remember, my dear friend, those who are non-pranic healer or pranic healer, practice properly. Those who are non-pranic healer, if you wish to learn, you can learn in your nearest area. You can message me. If you are from different city, I am from Mumbai, you are in Jaipur, you are in Delhi, you are in anywhere, you can ask me. I will forward you the number. If you wish to learn, go and learn the pranic healing courses. Clear? And those who are already doing, those who have done basic, do advanced course psychotherapy wherever you can. But this will bring a lot of change in your entire lifestyle. Clear? We cannot have an excuse like time nahi hai. Then my dear friend, God also doesn't have time for us. भगवान के पास भी time नहीं है. हम तो इतने बिजी नहीं, अरबों खरबों की जायदाद तो है नहीं, हमसे ज्यादा बहुत सारे लोग बिजी है. We need to think on that level कि am I really having all these excuses? मेरे पास time नहीं है. Clear? Think about it. If you really want to bring change within you, you need to spare time for self. क्योंकि आज हमने इस body को repair नहीं किया ना, तो my dear friend, I know some of you, and I know some people, those who are struggling to come out of the bed. आपको वो दिन देखना है क्या? I wish कि आप कभी ऐसा दिन न देखें. You really need to work on your chakras to heal yourself and walk. We all need to set an example for the people that see, I do self-healing every day. I keep myself healthy physically, psychologically. My body's age is 54. The body का age 54 है. I want to set an example at the 75 also. I want to walk straight. And रोज मुझे 1 घंटा चलना है. At the age of 75 also. So wherever I go for walk, I see people walking, elderly people, 70, at the age of 70, I keep on looking at them and I say, God bless him with more strength. God bless this lady with more strength. God bless this gentleman with more strength, more healing, more energy. They are inspirational to people. So that is called like Buddham Sangam Gacchami. Surround yourself with positive people. Surround yourself with the people, those who will motivate you. Be in a company with the people, those who will inspire you. Be in a company with the people, those who always give the right guidance to you. Be in a company with the people, those who are successful in their life. Be with the people, those who have a character built in their life. So that we get inspired to do everything. That's the right thing to do. Clear? Thank you very much for joining. Let's do the closing prayer and we'll close the session. To the Supreme One, Divine Father, Mother, to our beloved teacher, Grandmaster Chopak, Lord Mahapurush, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, and spiritual elders. We thank you for your priceless blessings. With gratitude, with respect, with love, I thank you. Open your eyes with a smile. Atman Namaste. Wish you all happy time, lucky time. Have a fantastic Saturday evening. Thank you for joining. Thank you.